लिखिए इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव। हेडिंग दो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव। लिखिए द टर्म माइक्रोवेव is used to design electromagnetic oscillation with frequency ranging from about 300 megahertz to 300 gigahertz or with wavelength ranging from 100 centimeter to 1 mm, 100 centimeter to 1 mm, and microwave region has been divided into 3 bands, namely ultra short wave, super short wave, and extreme short wave. Microwave application can be noted as following. पहला लिखिए टेलीकम्युनिकेशन, TELECOMMUNICATION। लिखिए इंटर कंटिन्यूटी इन टेलीफोन, इसमें लिखिए इंटर कंटिन्यूटी इन टेलीफोन एंड टेलीविजन एंड स्पेस कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री कम्युनिकेशन, लिंक फॉर रेलवे। हेडिंग दीजिए, देखिए रेडार, REDARS। देखिए ट्रैक, TRACK, ट्रैक, सुपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, MISSILIES, सुपरसोनिक SONIC, MISSILIES, ट्रैक वेदर पैटर्न, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, स्पीड डिटेक्टर, तीसरा लिखिए कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, COMMERCIAL, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। application used heat property of microwave, देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए माइक्रोवेव ऑन, OWN।
दूसरा लिखिए ड्राइंग मशीन्स, ड्राइंग मशीन्स। तीसरा लिखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लिखिए अगला लिखिए रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री। लिखिए बायोकेमिकल एप्लीकेशन, बायोकेमिकल एप्लीकेशंस। देखिए ड्राइंग इंक्स, अगला लिखिए ड्राइंग इंक्स, DRYING इंक्स, INKS, कॉमा ड्राइंग टेक्सटाइल, DRYNG ड्राइंग टेक्सटाइल, कॉमा पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। चौथा लिखिए अब फोर्थ पॉइंट, बड़ा फोर्थ पॉइंट, telecommunication, radars, commercial and industrial application use the heat property of microwave। अगला लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, WARFARE, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर। इसमें एरो लिखिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम, स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम। ठीक है, इतना बहुत है। हेडिंग दीजिए माइक्रोवेव रीजन, हेडिंग दीजिए माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन एंड बैंड डिजाइनेशन, बैंड डिजाइनेशन। देखो फ्रीक्वेंसी रेंज टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी रेंज और बैंड डिजाइनेशन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ULF, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। दूसरा लिखिए 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ELF, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। तीसरा लिखिए 300 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज, वॉइस फ्रीक्वेंसी। VF, 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। VLF, कौन लिखिए 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी।
300 kilohertz to 3000 kilohertz. Medium frequency. Medium frequency. देखिए 3 megahertz to 30 megahertz. Medium frequency. 3 mega high frequency. Thirty megahertz to 300 megahertz. Very high frequency. Very high frequency नहीं है ना? हमें तो पता ही नहीं है। 300 megahertz to 3000 megahertz. Ultra high frequency UHF. Ultra high frequency. Three gigahertz to 300 gigahertz. Extreme high frequency. Extreme high frequency. 300 gigahertz to 3000 gigahertz. Infrared region. Infrared region. हो गया ना? पहला सवाल ये है that the symmetry and asymmetry between that the symmetry and asymmetry between symmetry नहीं है A लगा दो S Y double M E T R Y asymmetry between transmission line and waveguide between transmission line and waveguide पहला लिखिए पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर सिमेट्री ब्रैकेट में लिखिए सिमिलरिटीज SIMILARITIES similarities between transmission line and waveguide between transmission line and waveguide पहला लिखिए इसमें भी पहला पॉइंट देखिए वेव ट्रेवलिंग इन वेवगाइड wave traveling in waveguide has a phase velocity and will be attenuated as in a transmission line will be attenuated A-double-T-E M-U-A-T-E-D attenuated as in a transmission line. अगला देखिए when the wave reaches the
When the wave reaches the end of the waveguide, when the wave reaches the end of the waveguide, is reflected unless the load impedance each adjusts to absorb wave. Usually, any irregularity in a waveguide provided reflection just like an irregularity in a transmission line. So the reflected wave can be eliminated by property impedance matching as in transmission line. Matching matching as in a transmission line. अगला देखिए when both incident and reflected wave are present in a waveguide, standing wave result as in a transmission line. Cutting the dissimilarity between transmission line and waveguide. Dissimilarity between transmission line and waveguide. पहला ये there is a cutoff value for the frequency of a transmission. Depending upon the there is a cutoff value for the frequency of a transmission depending upon the dimension and shape of the waveguide. Paragraph change करके लिखिए only wave having frequency greater than cutoff frequency vector लिख लेना FC will be propagated. Hence waveguide act as a high pass filter.
act as a high pass filter with cutoff frequency. देखिए पैराग्राफ चेंज करके in a two wire lossless transmission line, in a two wire loss line transmission line, all frequency can pass through. ये ऐसा कह रहा है कि वेव गाइड में से ओनली वही वेव प्रोपेगेट करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, और जबकि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ वही ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सारी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, पास कर सकती है। समझ गए ना। देखिए दूसरा, वेव गाइड इज ए वन कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए that is the whole body of the waveguide. Act as ground, and the wave propagate through multiple reflections from the walls of waveguide. From the walls of the waveguide, from the walls WALLS of waveguide, अगला लिखिए, the velocity of propagation of the waveguide, the velocity of propagation of the wave inside the waveguide is quite different from that through full space due to multiple reflection from the wave of the waveguide multiple reflections from the wave of the waveguide. So the लिखिए, in waveguide we define the wave impedance. In waveguide we define the wave impedance which is analogous to ANALOGS, analogous to the characteristic impedance Z0 of two-wire transmission line. तीसरा पांचवा लिखिए, the system of propagation in waveguide is according to field theory, FIELD, field theory, that in the transmission line we use circuit theory. समझ में आ गया क्या? ये अपन दो ही चीज पढ़ेंगे, एक तो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, वेवगाइड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सवाल लिखिए, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस OBTAIN, obtain expressions for the various field components of electromagnetic waves
of electromagnetic waves propagating in a rectangular waveguide, in TEMN mode, full stop, sketch field, SKETCH, sketch field distribution inside the waveguide for the dominant mode and the method of excitation of dominant TE mode in a rectangular waveguide ठीक है, ये सवाल करेंगे अब।